Hello everyone. For this lesson, I am referring to NCERT math book. This is Class 5, Chapter 5, Far and Near. A quick recap. Before this, we learned the units. We understood that to measure smaller units, we use meter and centimeter. For shorter distances, or for shorter length, we use meter or centimeter. For example, if it is about a piece of cloth, so we measure it in meter. If it is about pencil, we measure it in centimeter. So that's how meter and centimeter are standard units of measuring length, short length. We also learned that how we convert meter into centimeter. So if it is given to us that it's 1 meter, we learned that 1 meter is equal to 100 centimeter. So how many centimeters would be there in 5 meters? So we multiply 100 by 5. That gives us 500 centimeter. So this is converting from meter to centimeter, from a bigger unit to a smaller unit. We multiplied. Okay, we multiplied it by the number. So that was from bigger unit to smaller unit. Bigger unit is meter, smaller unit is centimeter. So to convert from a bigger unit to a smaller unit, we did multiplication. Okay. Likewise, if we have to convert from a smaller unit to a bigger unit, for example, 100 centimeter is equal to 1 meter. So if we have to convert from smaller unit, let's say 1000 centimeter is equal to how many meters? So in this case, we'll divide 1000 by 100. Okay, so we cancel out these zeros and the answer we get is 10 meters. So you see this, from smaller unit to a bigger unit, we divide it by 100 because the standard is of 100. Okay, and from bigger unit to a smaller unit, we multiply by 100. Alright, so this is a quick recap. Now let's see how do we measure long distances. Now here are some ways in which you can measure long distances. They are given to you: long tape, rotometer, range finder and laser distance meter. To know more about them, you can simply Google the words and you will get all the information about it. Okay, this is a small activity that you can do on your own. Let us explore. Yeah, now to measure the longer distance, the unit that we use is a kilometer. Kilo stands for 1000. So hence we write that 1000 meter make 1 kilometer. So this is another one that you have to keep in mind, that we have 1000 meter is equal to 1 kilometer. Okay. Okay, let's look at this table and see what is asked in this one. It says length of rope is 1000 meter, number of ropes needed to make 1 kilometer. तो अगर एक रोप है जिसकी लेंथ ऑलरेडी 1000 मीटर्स है, तो उसको 1 किलोमीटर कवर करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे को वैसी कितनी रोप्स लगेंगी. ठीक है, तो क्योंकि 1 किलोमीटर है और जो रोप की लेंथ है वो 1000 मीटर है, तो 1000 कितना होता है? 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो दैट्स हाउ वी हैव गॉट अ 1 हियर. तो एक ही रोप लगेगी बिकॉज वो 1000 मीटर्स लंबी है ऑलरेडी. राइट, नाउ इन द नेक्स्ट वन, दिस इज 100 मीटर. अब एक रोप है जिसकी लेंथ 100 मीटर्स है, तो 100 मीटर्स के लिए हमारे को कितनी रोप्स लगेंगी? सो इन दिस केस वी हैव द लेंथ ऑफ रोप गिवन टू अस इज 100 मीटर्स, और 100 मीटर्स की कितनी रोप हमको लगेंगी सो दैट इट मेक्स 1 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स. तो अब हम देखते हैं, तो हमने क्या किया, हमने 1000 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आया 10. तो 100 मीटर्स की कितनी रोप्स लग रही हैं? 10 रोप्स लग रही हैं. ठीक है, अब ऐसे ही आप इसमें ये भी कर सकते हो. 10 मीटर्स, आप इस केस में आप 1000 को डिवाइड करोगे 10 से. अब हम 1000 को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? देखो, जब हमारे को कोई कैलकुलेशन करनी होती है, प्लस माइनस, है ना, और डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है कोई नंबर्स को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द सेम यूनिट्स. अब यहाँ पर ये यूनिट है मीटर और यहाँ पर हमको किलोमीटर दिया हुआ है,
तो किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो हमारे पास आया 1000। अब इधर की और ये यूनिट दोनों सेम हो गई, तो 1000 को हम डिवाइड कर सकते हैं 10 से, एंड दैट्स हाउ विल गेट आवर आंसर 100। ओके, नाउ द रेस्ट आई लीव फॉर यू टू प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको मालूम है आपको 1000 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके।